Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Hello dears, welcome back to our study channel Success Your Study. आज आम डिस्कशन करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विषय जदि आप +2 एग्जाम देवाई जाऊँगी साइंस देन आप वीडियो टी लास्ट पर्यंत निहाती देखूँ कहीं ये आम प्रीवियस ईयर 2018 कौन क्वेश्चन आसाला और तार आंसर कौन हम से विषय डिटेल्स डिस्कसन करवा ता सहित क्वेश्चन कौ टाइप आसे क्वेश्चन पैटर्न कौन रहे केते मार्क आसे कौ टाइप आपणकर आपन को लिखापी पड़े ये सब विषय भी आपको नॉलेज हो ठीक अच्छे तो वीडियो टी लास्ट पर्यंत जरूर देखूँ एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करनी चलते एबे स्टार्ट करवा वीडियो केमती आसे मुझे जन दूची जोटा कि आपंकर क्वेश्चन आसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपंकर टोटाल 14 मार्क क्वेश्चन आसे जोटा कि मल्टीपल चॉइस 7 मार्क आसे आपंकर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 7 मार्क आसे टोटाल 14 मार्क आपंकर 1 मार्किया क्वेश्चन आसो और 2 मार्किया क्वेश्चन आपंकर 7टा रहे जोटा कि ये भी 14 मार्क एवं 3 मार्किया क्वेश्चन आपंकर भी 7टा आपको आंसर देवाई पड़ो 10टा क्वेश्चन थी भर 7टा आपको आंसर करने पड़ो ये टोटाल 21 मार्क है 21 एवं आपंकर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 3टा आंसर देवाई पड़ता है जोटा कि 7 × 3 आपंकर 21 मार्क थाए ये टोटाल आपंकर मिसिकी ये हो गला 70 मार्क क्वेश्चन आपंकर आसे आपन को जोटा कि आंसर करने पड़े क्वेश्चन 70 मार्क आउपाई टाइम दि जाए आपको 3 घंटा भितर ही आपको कंप्लीट करार अच्छी ठीक अच्छे तो ग्रुप ए रे आपंकर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थाए जोटा कि आप देखिपे फास्ट आपंकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 1500 नैनोमाइल इन व्हिच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट आंसर इंफ्रारेड The de Broglie wavelength of an electron moving with a constant velocity 0.367 nanometer. The mass of proton is 1835 times of an electron. The de Broglie wavelength of a proton moving with the same velocity will be 0.2 × 10⁻² meter, 0.3 × 10⁻12 meter. ऑप्शन ट्रिपल आई 0.4 × 10⁻12 0.5 × 10⁻12 जोटा कि राइट आंसर हम 0.2 × 10⁻² मीटर ऑप्शन आई क्वेश्चन नंबर सी ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has capacitance 3 SF if the capacitor is immersed in a liquid dielectric constant 4.0 its capacitance will be 0.75 microfarad 1.5 microfarad 6 microfarad 12 microfarad answer 12 microfarad option number IP due to the presence of a point charge at the center of a spherical Gaussian surface diameter A 10⁶ nanometer square by coulomb amount of electric flux pass through it keeping the point charge at the center Gaussian surface is changed to a cubical Gaussian surface of side A the flux through the new Gaussian surface will be option number I √2 × 10⁶ Newton meter square per coulomb 10⁶ per √2 Newton meter square per coulomb 10⁶ Newton meter square per coulomb 2 √2 × 10⁶ Newton meter square per coulomb आंसर होगा 10⁶ Newton meter square per coulomb जोटा कि ऑप्शन ट्रिपल आई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ई The blue color of the sky is due to which of the following phenomenon of light? Interference, scattering, diffraction, dispersion. Answer scattering. The power
of a convex lens of focal length 20 cm in diopter unity is -10, -5, 5 or 10. Answer 5. Fraunhofer diffraction by a single slit is produced on a screen by using light of wavelength 600 nanometer. The width of the central maximum 1 millimeter. Wavelength of the light is 400 nanometer. Changed to 400 nanometer. The width of the central maximum will be central maximum टा केते होबो जोटा कि 0.5 millimeter, 0.66 millimeter, 1 millimeter, 1.5 millimeter. Answer 0.66 millimeter. क्वेश्चन नंबर 2 जोटा कि एठी भी आपन को 1 मार्क के 7टा क्वेश्चन आंसर दबा पई पड़िबो 1 into 7. द सक्सेसिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल. सक्सेसिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल एटे ऑप्शन देछि एटे आपन को सिंबल देछि कि कोन आपन को लिखिबा पई पड़िबो केमती ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. एटा लेस देन 0 होबो. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at the center of a circular coil carrying current is 0.005 T. Will be the magnetic field sensed if both the number of turns and current are doubled. Yes or no रे अपन को आंसर दबा पई पड़िबो. क्वेश्चन कोन देछि the magnetic field produced at the center of a circular coil carrying current A. current केते 0.005 turns. Will the magnetic field if both number of turns and current are double? Answer of yes. जदि चेंज हम दीटा जाक तो चेंज हो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हम ये देछि जदि आपनकर टर्न्स आउ करंट दीटा जाक डबल हम ताले मैग्नेटिक फील्ड चेंज हम ना हबनी. तो ये आंसर yes होगा. ऑप्शन क्वेश्चन सी जोटा कि ए स्टूडेंट सेड दैट ए पॉसिबल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड j c to the power -1 m to the power -1 एटा भूल एठी लिखाइ छी एटा हो j c to the power -1 m to the power -1. तो एटा ठीक होबा कि नहीं तो एटा ठीक होबा yes. The electric potential at a point at a distance of 2 meter from a point charge of 0.1 mu c is 450 volt. The electric field at the point will be 225 Newton per coulomb. The variation of resistivity rho. The variation of resistivity rho of a material with absolute temperature T is given by the following figure. The material is a semiconductor or conductor. सेटा आपन को ये ब्लैंक रे लिखिबा पई पड़िबो कंडक्टर ना सेमीकंडक्टर. एठी आंसर हबा सेमीकंडक्टर. In an optical fiber, the propagation of light occurs due to which phenomenon? Total internal reflection. Total internal reflection. In an optical fiber, the propagation of light occurs due to total internal reflection. The refractive index. The refractive index of a medium is √3 when light travels from air to that medium. The Brewster angle will be 60 degree. According to Brewster's law, tan IP is equal to mu. IP is equal to tan inverse mu. IP is equal to tan inverse mu. Mu एठी हमर देछि √3. tan inverse √3 कले एटा सो 60 degree. क्वेश्चन नंबर 3 जोटा कि ग्रुप बी स्टार्ट है गला. क्वेश्चन नंबर 3 2 into 7
जोटा कि आपंकर 2 मार्किया क्वेश्चन थी 10टा क्वेश्चन आपको 7टा क्वेश्चन आंसर करने पड़ो। ये आंसर एनी 7 of the following. When a photon corresponding to the third line of Pascal series of hydrogen spectrum is emitted, determine the change in angular momentum of the electron associated with the process. A photon corresponding to the third line of Pascal series of hydrogen atom is emitted when transmission of electron from 6th orbit to 3rd orbit taken place. Change in angular momentum 6s by 2 pi minus 3s by 2 pi is equal to 3s by 2 pi. क्वेश्चन बुझिपारे जितेबाला आपणकर थर्ड लाइन में पास्कल सीरीज हाइड्रोजन आसे एमिटेड हुए से एंगुलर मोमेंटम बाहर करने दे था। ठीक अच्छे डिटरमाइन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस से प्रोसेस रे एंगुलर मोमेंटम टा बाहर करबो। एठी जोटा कि देछि हमरा कोन आंसर कोन हबो ना फोटोन करेस्पोंडिंग टू द थर्ड लाइन ऑफ पास्कल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एमिटेड केतेबेला एमिटेड हबो व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from 6th orbit to 3rd orbit taken place. जेतेबेले इलेक्ट्रॉन टा 6th orbit रो 3rd orbit को आसीबो सेतेबेले हबो चेंज एटा एंगुलर मोमेंटम टा केमती चेंज हबो 6th orbit रो माइनस 3rd orbit रो एटा माइनस कले आसी जिवो 3s by 2 pi. Question number B. Use the length equation 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f and prove that for a convex lens when the object is placed with a focal length भितरे object रहिबो the image will be Gaussian. Lens equation 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f, that implies 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. It is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f, 1 by v रहिला 1 by u टा एपट को आसले माइनस से जिवो तो ये माइनस हो गला 1 by f minus 1 by u. ये आमर देछि कोन ना फोकल लेंथ टारू कम हबो बट देछि कन्वेक्स लेंस रे ऑब्जेक्ट कोठी अछि प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ माने फोकल लेंथ रो डिस्टेंस टा f इज ग्रेटर देन u f टा बडो सो दैट एठी कोन हबो ना नेगेटिव आसीबा हमर आंसर टा नेगेटिव आसिले नेगेटिव इमेज डिस्टेंस इंप्लाइज वर्चुअल इमेज. The work function of a photosensitive material is 2 electron volt. Calculate the threshold wavelength. Work function phi is equal to Sc by lambda. Threshold wavelength lambda is equal to Sc by phi 0. Is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 into 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 meter जोटा कि आंसर हबा 6.2 into 10 to the power minus 7. A point charge of 3 into 10 to the power minus 9 C released from rest in a uniform electric field and move a distance 5 centimeter, after which its kinetic energy becomes 4.5 into 10 to the power minus 5 joule. Calculate the magnitude of the electric field. A point charge 3 into 10 to the power minus 9 C is released from rest in a uniform electric field and move a distance 5 centimeter move kala, after which its kinetic energy becomes kinetic energy ta change hela 4.5 into 10 to the power minus 5 joule. Calculate the magnitude of electric field. Work done by the electric field is equal to increase in kinetic energy. Ft is equal to
del E K QED is equal to A K E यार वैल्यू पकईदेल E is equal to del जोटा कि हमर चेंज है del E 4.5 into 10 to the power minus 5 3 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power minus 2 एटा डिस्टेंस चार्ज Q जगह Q रो वैल्यू पकईदेल del E के जगह तार वैल्यू पकईदेल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तार वैल्यू पकेला पर एठी हमर याको रिजॉल्व करबा रिजल्ट करे आसबा 10 टू द पावर 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। Question number E, electric charge Q is uniformly distributed around a thin metallic circular coil of single turn and a radius I. Question number E, an electric charge Q is uniformly distributed around a thin metallic circular coil of single turn of the radius A. Find the expression for the electric potential at a point on its axis at a distance x from its center. Potential on axis at a distance x is equal to V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by root over of a square plus x square. Distinguish between frequency and amplitude modulation. Amplitude modulation और frequency modulation भितर difference कौन? Amplitude modulation and frequency modulation. Amplitude modulation ने first point amplitude of frequency carrier charges. Frequency modulation ने frequency carrier wave charges. Second point, amplitude modulation reception is noisy. Frequency modulation reception is not noisy. Third point, amplitude modulation. Third point, small operating range and frequency modulation ने long operating range. Fourth point, amplitude modulation low efficiency, frequency modulation high efficiency. टोटल आमर 4टा लेखा पॉइंट है गला जोटा कि amplitude modulation ने amplitude of frequency carrier charges, reception is noisy, small operating range and low efficiency. Frequency modulation, frequency carrier wave charges, reception is noisy, of long operating range, high efficiency. एबे क्वेश्चन नंबर G, state 4 properties of nuclear force. Nuclear force रो 4टा गुण properties. Answer, characteristics of nuclear force are: it is a strongest force of the nature. Second, it is a charge independent force. Third, it is a short range force. Fourth, it is attractive in nature. 4टा पॉइंट ही लिखिबे जोटा कि इम्पोर्टेंट लगुच आपन ठीक अछि। तो ये हमें आंसर कौन है जानी पारे कैरेक्टरिस्टिक्स आमर रोची मेन जोटा कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर रोची, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर। आ गोटे पॉइंट आछि जोटा कि एडिशनल पॉइंट, इट इज ए स्पाइन डिपेंडेंट फोर्स, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, एटा स्पिन ऊपर डिपेंड करे। क्वेश्चन नंबर H, write the relation between nuclear mass, defect and binding energy and name the terms in it. Relation between nuclear mass, defect and binding energy, name the terms in it. EB is equal to del M C square, where EB is equal to binding energy, del M is equal to mass defect, C is equal to velocity of light. Relationship कौन अच्छे हमारा न्यूक्लियर मास, हमारा रिलेशन कौन अच्छी न्यूक्लियर मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड या भितर टर्म्स जोटा कि हमारा
रिलेशन है EB इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। एठी EB होची बाइंडिंग एनर्जी, डेल एम मास डिफेक्ट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर I, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। डिस्टिंग्विश न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन, फर्स्ट splitting of heavy nuclear takes place. Splitting of heavy nucleus takes place. Nuclear fusion में fusion of light nuclei takes place. न्यूक्लियर फ्यूजन ने स्प्लिटिंग हम माने गोटे बड़ हेवी न्यूक्लियर ओजनिया न्यूक्लियर ताको भांगिबा स्प्लिटिंग। बट न्यूक्लियर फ्यूजन छोट छोट न्यूक्लियर को फ्यूजन करिबो मिसेबा। एटा होची फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज कंपैरेटिवली लेस। एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज कंपैरेटिवली लेस। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज हायर। इटी अधिक एनर्जी रिलीज हम बट न्यूक्लियर फ्यूजन ने कम एनर्जी रिलीज हम। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर फ्यूजन कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हो पारिबो। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन हेवी very high temperature is necessary. For nuclear fusion very high temperature is necessary. तीनटा पॉइंट कौन कौन है? न्यूक्लियर फ्यूजन, फर्स्ट splitting of heavy nucleus takes place. Second, energy released per unit mass is comparatively less. Third, nuclear fusion can takes place at room temperature. But nuclear fusion ने fusion of light nuclei takes place. Energy released per unit mass is much higher. For nuclear fusion very high temperature is necessary. Difference between p-type and n-type semiconductor. p-type semiconductor holes are majority charge carrier and electron minority carrier. N-type semiconductor, electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. Point double I, trivalent impurity atoms are added to Si or Ge to prepare p-type semiconductor. Second, pentavalent impurity atoms are added to prepare n-type semiconductor. Mobility of hole. The mobility of hole is less than that of electron. But n-type semiconductor रे the mobility of electron is more than that of holes. p-type semiconductor रे हमर तीनटा पॉइंट, holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carrier. Second, trivalent impurity atoms are added to prepare. Third, the mobility of hole is less than the electron. एटी तीनटा पॉइंट जोटा है इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सेकेंड, पेंटावलेंट impurity atoms to prepare n-type semiconductor. And third, mobility electrons is more than that of hole. अगर वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए. ठीक है.